हेलो स्टूडेंट। ऑपरेशन रिसर्च में आज हम लोग सिंप्लेक्स मेथड में कुछ स्पेशल केसेस को देखेंगे जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। 2 वेरिएबल्स एंड 3 वेरिएबल्स का। तो आज हम लोग नया लेक्चर उसी में कंटिन्यू करेंगे और स्पेशल केसेस को देखेंगे। देखिए, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, आज हम लोग स्पेशल केसेस देखेंगे उसी में ही। मतलब 2 वेरिएबल्स एंड 3 वेरिएबल्स में जो कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे इनफिजिबिलिटी, अनबाउंडेड सॉल्यूशन, डीजेनरेसी, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ इनफिजिबिलिटी क्या होता है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन क्या होता है, डीजेनरेसी क्या होता है, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इनफिजिबिलिटी। इनफिजिबिलिटी यानी कि इनफिजिबिलिटी क्या है? कम्स अबाउट व्हेन देयर इज नो सॉल्यूशन दैट सेटिस्फाई ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स कांस्टेंट। मतलब इनफिजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि हमें x1 x2 x3 जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं, डिसीजन वेरिएबल्स हैं, कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है तो उसको हम बोलते हैं इनफिजिबिलिटी। इनफिजिबिलिटी कम्स अबाउट व्हेन देयर इज नो सोल्यूशन दैट सेटिस्फाई ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स कांस्टेंट। इन द सिंपलेस्ट मेथड एन इनफिजिबल solution is indicated by looking at the final table. In such a situation, all net evaluation row entries will be of the proper sign to imply optimality, but an artificial variable will still be in the basis. A situation with no feasible solution may exist if the problem was formulated improperly. मीन्स अगर आपने क्वेश्चन को सही से सॉल्व नहीं किया है, और इस तरीके से यहाँ पर जो आप देखो, ये जो है 31 - m, यहाँ पे ये m क्या है? दिस इज आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो ये क्या है? ये स्टिल यहाँ पर परसिस्ट, मतलब स्टिल यहाँ पर है। तो और यहाँ बेसिक फिजिबल सोल्यूशन में भी दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इन द सिंप्लेक्स मेथड एंड infeasible solution is indicated by looking at the final table. In such a situation, all net evaluation row entries will be of the proper sign to imply optimality, but an artificial variable will still be in the basis. A situation with no feasible solution may exist if the problem was formulated improperly. So comes about when there is no solution that satisfy all the problem constant. तो इस तरीके से इनफिजिबिलिटी क्या होता है? इनफिजिबिलिटी का मतलब नॉट फिजिबल। नॉट फिजिबल यानी फिजिबल का जस्ट अपोजिट इनफिजिबिलिटी। इनफिजिबिलिटी इज एग्जिस्ट व्हेन देयर इज नो सॉल्यूशन कम अराइज। तो कम्स व्हेन देयर इज नो सॉल्यूशन दैट सेटिस्फाई ऑल ऑफ द प्रॉब्लम कांस्टेंट्स. So in simplex method, the one of the 4 special cases which is one is इनफिजिबिलिटी। इसमें देखिए, ये जो बेसिक वेरिएबल है x1 है, x2 है, s1, एक मिनट, बेसिक वेरिएबल x1 x2 स्लैक वेरिएबल, एंड s2 is the slack variable 2, artificial variable 2, basic feasible solution. तो यहाँ पे x1 x2 और a2 क्या है? यहाँ पर आपका बेसिक वेरिएबल और 1 डिसीजन वेरिएबल x1 x2 x एंड a2 आर व्हाट? यहाँ पर a2 क्या है? दिस इज द आर्टिफिशियल वेरिएबल्स. सो 1 0 0 0 1 0 -2 1 0 3 2 -1 -1 -2 -1 0 0 1. Basic feasible solution is 200 120. So this is the 0 0 -2 31 -m -2 m plus 21 and 0 and 1 8 00 plus 20 m. So this is called infeasibility. Infeasibility comes about when there is no solution that satisfy all of the problems constant. In the simplex method, an infeasible solution is indicated by looking at the final table.
In such a situation, all net evaluation row entries will of the proper sign to imply optimality, but an artificial variables will still be in the basis. A situation with no feasible solution may exist if the problem was formulated properly. चलिए next is students, next is unboundness. Unboundness क्या होगा? This is unbounded. Unbounded describes linear programs that do not have finite solutions. It occurs in maximization problem when the solution variables can be made infinitely large without violating a constant. Unboundness means होता है कि इसके कोई फाइनाइट वैल्यू ना मिले. मतलब जैसे कि ये क्या है, अगर हमने ये एक सर्किल बनाया है तो दिस सर्किल हैव बाउंड्री, दिस सर्किल हैव बाउंड्री, मतलब यहाँ से इसको इस तरीके से हमने, तो ये क्या है, दिस इज द बाउंड्री. अब क्या है, ये बाउंड्री है, ठीक है. तो अनबाउंडनेस मीन्स हो गया देयर इज, दिस इज नो बाउंड्री. एक मिनट, unboundness means there is no boundary, means there is no boundary. तो ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में आता है. इट occurs in maximization problems when a solution variable can be made infinitely large without violating a constraint. तो describe linear programs that do not have finite solution. It occurs in maximization problem when a solution variable can be made infinitely large without violating a constant. In the simplex method, this will be discovered prior to reaching the final table. It will be manifested when trying to decide which variable to remove from the basis. If all the ratios turn out to be negative or undefined, it indicates that the problem is unbounded. So in the simplex method, this will be discovered prior to reaching the final table. It will be manifested when trying to decide which variable to remove from the basis. It will be ratios turn out to be negative or undefined. यानी कि अगर यहाँ पर x1, x2, x1 की वैल्यू नेगेटिव है, x2 की वैल्यू नेगेटिव है, तो z की वैल्यू भी नेगेटिव होगी. If all the ratios turn out to be negative or undefined, it indicates that the problem is unbounded. ये आपका इस तरीके से होगा. इसी तरीके से ये आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, दिस इज द बेसिक वेरिएबल्स, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन. ये जनरली किस केस में होता है? इट अकर्स इन मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम. Maximization, it occurs in maximization problem when a solution variable can be made infinitely large without violating a constant. In the simplex method, this will be discovered prior to reaching the final table. It will be manifested when trying to decide which variable to remove from the basis. If all the ratios turn out to be negative or undefined, it indicates that the problem is unbounded. Next is degeneracy. Degeneracy degeneracy develops when the constant pass through a single point. For example, suppose a problem has only these three constants. X1 is less than and equal to 10, X2 is less than equal to 10, and X1 plus X2 less than 20. All three constant lines will pass through the point 10, 10. Degeneracy develops when the constant pass through a single point. For example, suppose a problem has only these three constants. X1 less than and equal to 10, X2 less than and equal to 10, and X1 plus X2 less than 20. All three constant line will pass through the point 10, 10. Degeneracy is first recognized when the ratio calculations are made. If there is a tie for the smallest ratio, this is the signal that degeneracy exists. As a result of when the next table is developed,
वन ऑफ द वेरिएबल इन द सॉल्यूशन मिक्स हैव वैल्यू ऑफ द जीरो। ये डीजेनरेसी कब होगी? जब हम यहाँ पर जो बेसिक जो मिनिमम रेशियो है, मिनिमम रेशियो में टाई हो रहा है, यानी कि यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है। So, as a result of this, when the next table is developed, one of the variables in the solution mix will have value of 0. If there is a tie for the smallest ratio, this is the signal that degeneracy exists. As a result of this, when the next table is developed, one of the variable in the solution mix will have value of 0. Degeneracy could lead to a situation known as cycling, in which the simplex algorithm alternate back and forth between the same non-optimal solution. One simple way of dealing with the issue is to select either row in question arbitrarily. If unlikely and cycling does occur, simply go back and select the other row. तो इस तरीके से डीजेनरेसी अकर्स होती है। मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा? मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन in the simplex method, multiple or alternate optimal solution can be spotted by looking at the final table. If the net evaluation value is equal to 0 for a variable that is not in the solution mix, there more than one optimal solution exists. In the simplex method, multiple or alternate optimal solution can be spotted by looking at the final table. If the net evaluation value is equal to 0 for a variables that is not a solution mix, and more than one optimal solution exists. Sensitivity analysis has an assumption in LPP. We know that the all other feasible cycle RHS and AIJS are constant, but in reality these are just estimate, and these parameters may change in reality. So it is important to the manager, who must operate in dynamic environment with imprecise estimate of the coefficient, that how a revised parameter will affect optimality. Sensitivity and you should know how the optimal solution is affected by changes within the specified regions. The objective function coefficient, that is CJS, the right-handed solutions, that is being BJS, the resources coefficient, the resources consumption coefficient, that is AIJS. Sensitivity analysis concern the effect on optimality solution, that is X is equal to XJ, J is equal to 1, and if one or more given model parameters are changed due to market supply capacity technology changes. मतलब अगर आप market supply कैपेसिटी टेक्नोलॉजी में कुछ भी चेंजेस करोगे तो आपके सेंसिटिविटी एनालिसिस वहां पर अकर होगी। सो चेंजेस सेंसिटिविटी एनालिसिस कंसर्न द इफेक्ट ऑन द ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, that is X is equal to XJ, J is equal to 1 dash dash dash, and if one or more given model parameters are changed due to market oblique supply oblique capacity oblique technology oblique changes, so sensitivity occurs. Changes in the objectivity functions coefficient. Graphically, changes in CJ will change the slope of objective function, which may or may not affect the optimal solution. Managerial questions here is that beyond what range of changes, say LJ is less than CJ is less than UJ, optimal solutions not J will be changed. A large range indicate insensitivity of Z to change in CJ. Changes in non-basic objective function coefficient. The goal is to find out how sensitivity the problem's optimal solution is to change in the contribution rates of variables not currently in the basis. The answer lies in the Z row of the final optimal simplex table. If LPP is a maximization problem, so the basis will not change unless the net evaluation of one of the non-basic variables becomes less than 0. For a non-basic objective function coefficient, say Ck, the range of change in Ck say delta Ck given by
so as to current solution remain optimal. Change in basic objective function coefficient, sensitivity analysis on objective function coefficient of variable in the basis or solution makes it slightly more complex. A change in the profit or cost of the basic variables can affect the net evaluation values for all non-basic variables. Range of change of basic CK for solution to be remain optimal for maximization type LPP will be given by maximum maximum J minus Jth net evaluation divided by positive AKJ in optimal table delta less than or equal to delta. ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को सेटिस्फाई ये, और इसी तरीके से चेंज इन नॉन बेसिक ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट, यहाँ पे ये कंडीशन। तो इससे क्या होगा, चेंजेस इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट, इससे सेंसिटिविटी एनालिसिस होगी। In changes in the objective function coefficient, graphically changes in the CJ will changes the slope of objective functions, which may or may not affect the optimal solution. Managerial question here is that beyond what range of changes say LJ is less than and equal to CJ and less than or equal to UJ, optimal solution next will be changed. A large range indicate insensitivity of Z to changes in CJ. Changes in non-basic objective function coefficient. The goal is to find out how sensitivity the problem's optimal solution is to change in the contribution rates of variables not currently in the basis. The answer lies in the Z row of the final optimal simplex table. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से देखिए, अब देखिए, take the example of cold drink manufacturing company where the optimal simplex tables was basic variable x1. This is the slack variables s1 and s2 and s3. Z is equal to this. x1 is equal to 1, 0, 0, 0. x2 is equal to 2 by 3. 8 by 3, 22 by 3, 1 by 3, minus 2 by 3, minus 5 by 3, 4 by 3. S2 is 0, 1, 0, 0, and S3 is 0, 0, 1, 0. So initial basic feasible solution is 100, 280, 60, and 400. And the problems was objective function maximize Z is equal to 4x1 plus 2x2 subject to constraint 3x1 plus 2x2 less than and equal to 300, 2x1 plus 4x2 less than and equal to 480, 5x1 plus 7x2 less than and equal to 560, where x1, x2 is greater than and equal to 0. Change in non-basic objective function coefficient. स्टूडेंट्स यहाँ पर ये ग्राफ आप इस तरीके से बनाइएगा, ठीक है। Change in non-basic objective function coefficient, clearly the other solution for any change in C2 is equal to 2. अगर हम पुट करते हैं तो से डेल्टा C2 is equal to less than and equal to 2 by 3, where A is non-basic objective function coefficient is allowable so as not to affect optimality. That is C2 vary from minus infinite to 8 by 3 without affecting optimal solution, and value of the objective function will not change. Change in basic objective function coefficient allowable. Change in C1 say delta C1 without affecting optimality will be given by these conditions. So स्टूडेंट इस तरीके से हम सेंसिटिविटी की एनालिसिस करेंगे यहाँ पर। तो देखिए इस तरीके से स्टूडेंट ये क्या है, दीज आर द स्पेशल केसेस व्हाट आई हैव टोल्ड हियर, sensitivity analysis and special cases like infeasibility, unbounded solution, degeneracy, multiple optimal solution. Infeasibility का क्या कंडीशंस है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है, डीजनरेसी क्या है, एंड मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन
क्या है यहाँ पर, यानी कि इनफिजिबिलिटी कब होती है, अनबाउंडेड अनबाउंडेड कब होती है, डीजेनरेसी कब होती है, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस कब होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इसको पढ़िए, ठीक है। कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।